हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का बहुत 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 स्वागत है। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू another beautiful story written by Rabindranath Tagore, and the name of the story is The Castaway. And as you all know, this is in the syllabus of class 11 alternative English, and as I always do, I am going to make a full explanation of the story. Okay, so without much delay, let us start the story and enjoy the story as well. Now you see there are four important characters in the story. Okay, चार important characters कहानी में है। कहानी ज़्यादा लंबा नहीं, it's not a very big story, it's a small story. Okay, but there are only four characters here. The first two characters that you see are Kiran and Sharad. They are husband and wife. Okay, ये husband और wife है। और एक character है Satish. There is another character called Satish. He is the brother of Sharad. Okay, and the brother-in-law of Kiran. Okay, और एक important character है कहानी में, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बाद में आपको बताऊंगा. I'll tell you a little later because that particular character is the most important character in the story. वो जो चौथा character है, the fourth character is the most important character in the story, and that I will not tell you right now. ठीक है, तो without much delay, let us start our explanation. So what happens is that on a very stormy day in Chandarnagar, there is a place called Chandarnagar. Kiran and Sharad were arguing very loudly. तो एक बहुत तूफानी दिन में चंदरनगर नाम के एक जगह में किरण और शरद, जो कि हस्बैंड और वाइफ है, वो लोग एक दूसरे से बहुत जोर जोर से झगड़ा कर रहे थे. दे वर आर्ग्यूइंग वेरी लाउडली एंड इट वाज देयर वाज अ ह्यूज स्टॉर्म गोइंग आउटसाइड. ओके, Kiran जो है the wife, okay, Kiran had been very sick but was getting better and wanted to go back to their hometown. Now Kiran and Sharad are actually away from their hometown. They had gone to Chandarnagar. Actually Kiran and Sharad had gone to Chandarnagar, leaving their hometown because Kiran wanted a change of place. Kiran क्योंकि बीमार थी, she was very sick. That is why she thought that a change of place will हेल्प इन रिकवरिंग माई हेल्थ. अगर मैं थोड़ा अपना जगह चेंज करूँ, अपना प्लेस चेंज करूँ, थोड़ा बाहर हम लोग घूमने चले, तो ये मेरे तबीयत के लिए भी अच्छा होगा. तो अब जो है किरण वापस अपना होम टाउन जो है वो लौटना चाहती है. किरण वांट्स टू रिटर्न बैक टू हर होम टाउन एंड ऑन दिस वेरी टॉपिक ओनली, ऑन दिस वेरी इशू ओनली, husband and wife, they are arguing. Okay, now here you see that, but Sharad thought that she should rest more and stay at home. But Sharad, her husband, thought that no. He told Kiran that no, you should take more rest and we should stay some more time in Chandarnagar. हमें कुछ और टाइम जो है चंदरनगर में रहना चाहिए. फिर हम लोग जो है अपने होम टाउन के लिए निकलेंगे, लेकिन अभी नहीं, नॉट नाउ. वी विल स्टे अ लिटिल बिट मोर इन चंदरनगर. बट किरण वांटेड टू गो बैक टू हर होम टाउन. शरद डिड नॉट वांटेड दैट. किरण अपने घर लौटना चाहती है, लेकिन शरद ये बोलता है कि तुम थोड़ा और बेहतर हो जाओ, थोड़ा और रिकवर करो, तब मैं तुमको लेके चलूंगा घर वापस, लेकिन अभी नहीं, हम थोड़े दिन और चंदरनगर में रहेंगे. और इसी के ऊपर जो है हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा चल रहा है. ओके, सडनली दे हर्ड अ लाउड नॉइस एंड वेंट आउटसाइड. उसी वक्त जो है जब वो लोग झगड़ा कर रहे थे, तो उसी वक्त जो है बाहर उन्होंने एक जोर का आवाज सुना. दे हर्ड अ लाउड नॉइज आउटसाइड. तो वो लोग चेक करने के लिए बाहर गए. इन ऑर्डर टू चेक व्हाट हैपेंड आउटसाइड, दे वेंट आउटसाइड एंड व्हाट दे डिस्कवर्ड इज दैट दे सॉ अ यंग बॉय इन द गार्डन. दिस इज द फोर्थ कैरेक्टर दैट आई एम टॉकिंग. ओके, दे सॉ अ यंग बॉय इन द गार्डन. ही वाज वन ऑफ दोस पीपल who survived a boat accident in the storm. So actually in the beginning of the story itself we come to know that it was a very stormy day. Okay, तो actually तूफान चल रहा था और नदी में जो है लहरें जो है, the waves in the river were very high. Okay, and what happened is that there was a boat accident, but this boy, and he was one of those, you know, out of those travelers, okay, passengers in that boy who survived this boat accident and he was swept away. वो बह के जो है किनारे पे आ गया था और वो वहीं पे था. वो मरा नहीं था. He was not dead, he was live. Okay, alive. Okay, this boy's name was नीलकांत. इस लड़के का नाम क्या था? नीलकांत था. ये वो चौथा कैरेक्टर है. तो चार कैरेक्टर कहानी में हम लोग देखते हैं. सबसे पहला कैरेक्टर है किरण, उसका हस्बैंड जो है वो शरद, और शरद का भाई सतीश,
दैट मीन्स किरण's brother-in-law and the fourth character we have is नीलकांता here. तो यहाँ पे नीलकांता है, और नीलकांता कौन है? नीलकांता बिलोंग टू अ थिएट्रिकल ग्रुप. तो कुछ एक ग्रुप है जो थिएटर्स करते हैं, ड्रामा करते हैं स्टेजेस पे, स्टेज ड्रामास करते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं थिएट्रिकल ग्रुप. तो ये थिएट्रिकल ग्रुप का एक मेंबर है नीलकांता, ठीक है. और किसी तरीके से जब वो बोट एक्सीडेंट हुआ तो ये छूट गया अपने ग्रुप से. ही वाज लेफ्ट आउट फ्रॉम हिज ग्रुप ड्यू टू दैट बोट एक्सीडेंट. ओके, उस बोट एक्सीडेंट है. आगे देखते हैं हम लोग कहानी में क्या होता है. नाउ नीलकांता's mischief, नीलकांता की शैतानी. नाउ नीलकांता एक्चुअली हम लोग देखेंगे नीलकांता का कैरेक्टर किस तरीके से जो है ज्यादा और हाईलाइटेड होता है इस कहानी में. हाउ नीलकांता's कैरेक्टर इज हाईलाइटेड मोर इन द स्टोरी वी विल सी. ओके, एंड ही इज द सेंट्रल कैरेक्टर. नीलकांता जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर है कहानी में, मेन कैरेक्टर है कहानी में. हम लोग देखेंगे उसका कैरेक्टर किस तरीके से चेंज होता है या क्या होता है, विल सी. नाउ किरण वेलकम्ड द बॉय वार्मली इनटू देयर होम. तो किरण जो है उस लड़के को बहुत वार्मली वेलकम करता है अपने घर में, ठीक है. सी, किरण डिड नॉट, आई एम सॉरी, नीलकांता डिड नॉट, was not any relative of the in Kiran's family or Sharat's family. Okay, Neelkanta had just swept away, or he was left out from his theatrical group in a boat accident, and he was stranded in that place. उसका बोट एक्सीडेंट हुआ था, वो अपने ग्रुप से बाहर निकल गया था, बहते बहते जो है नदी किनारे आ गया. इन्होंने उसको डिस्कवर किया और अपने घर लेके आया. कोई नहीं लगता है कि नीलकांता उनका कोई नहीं है, वो जस्ट एक उनको जो किरण का जो फैमिली है, स्पेशली किरण, एक्चुअली किरण वांटेड टू गिव शेल्टर टू दिस बॉय, जस्ट शेल्टर देने के लिए. ओके, तो किरण वेलकम द बॉय. किरण जो है इस लड़के को उसने बहुत हार्टिली वेलकम किया. एक लड़का रहने आया हमारे घर में, हम लोग रहने इन द सेंस दैट एक लड़के को हम लोगों ने डिस्कवर किया, ये यही रहेगा. दिस बॉय नीलकांता विल स्टे हियर ओनली. एट फर्स्ट एवरीवन वाज हैप्पी विथ हिम अराउंड, क्योंकि एक नया मेंबर था. और एग्जैक्टली जो एज है नीलकांता का जो बताया गया वो 14 से 17 का होगा. 14 से 17 ईयर्स का होगा. ही वाज नॉट एन अडल्ट, 18 प्लस नहीं है, वो एक यंग लड़का है. 14 से 17 साल का, 17 साल के बीच वो लड़का होगा. ओके, नाउ एट फर्स्ट एवरीवन वाज हैप्पी विथ हिम अराउंड. तो सब लोग बिगिनिंग में बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वही एक छोटा बच्चा टाइप का था घर पे. तो सब लोग बहुत खुश थे. वो थोड़ा बहुत शरारत करता था, ही यूज्ड टू बी अ लिटिल बिट नॉटी. Okay, and he used to entertain. Yes, one more thing. He used to entertain Kiran. He used to entertain Kiran because he belonged to a theatrical group. So he used to entertain Kiran by doing different kind of actings. है ना, क्योंकि वो एक थिएटर ग्रुप में था, इसलिए उसे बहुत सारी चीजें पता भी था. That is why he used to do entertain Kiran during evenings. He used to entertain Kiran doing different actings. And Kiran was very fond of this boy. Kiran जो है बहुत ज्यादा लाइक करने लगा इस लड़के को. डोंट थिंक लाइक इन द अदर सेंस. ओके, लाइक करने लगा यू इन द सेंस दैट एक्चुअली किरण वाज अ फन लविंग वेरी यंग लेडी, एंड देयर कुड हैव बीन एन एज डिफरेंस बिटवीन किरण एंड हर हस्बैंड शरत. किरण और शरत में एक एज डिफरेंस पहले के जमाने में ऐसा ही होता था, एट दैट टाइम, plenty of years back, this used to happen that husband and wife had a big age gap. Okay, and Kiran was like that. But when this boy came, it meant as if they were almost of the same age, Kiran and this boy Neelkanta. Not of the same age. Kiran could have been a little more senior, but not. There was not a big gap between Kiran and Neelkanta. तो किरण और नीलकांता में ज्यादा एज डिफरेंस नहीं था, ठीक है. तो अब जो है किरण जो है ज्यादा टाइम बिताने लगा इस लड़के के साथ, बट टेक इट इन अ पॉजिटिव वे. ओके, पॉजिटिव तरीके से टाइम बिताना लगा. एंड दिस बॉय यूज्ड टू डू ऑल काइंड ऑफ एक्टिंग्स. नीलकांता यूज्ड टू डू ऑल काइंड ऑफ एक्टिंग्स एंड एंटरटेन किरण. एंड किरण का जो है टाइम बहुत अच्छे से कट रहा था. किरण वाज spending her time very nicely with this boy. Okay, so everyone in the family was happy in the beginning, but after some time what happens is that Sharat and his mother, Sharat और शरत की मम्मी, that means Kiran's mother-in-law, started thinking that maybe it would be better if Neelkanta left the house. Up, why this happened? Actually, what happened is that in the beginning everybody liked Neelkanta. Beginning में शुरुआत में everybody liked Neelkanta, but initially what happened is that Kiran को छोड़ देते हैं. Okay, Kiran will not be taken into the frame.
Sharat, especially Sharat and his mother started thinking that it is better if Nilkanta would go away from the house to his own house. वो अपने घर वापस चला जाए, ये घर छोड़ दे. क्यों? Because his mischief started growing day by day. उसका जो शैतानी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा दिन ब दिन. And that could not be tolerated by Sharat and his mother. Sharat और उसकी मम्मी जो है ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पा रहा था. But Kiran was okay with Nilkant. You know, she was spending her time very beautifully. आगे देखते हैं. Now क्या हुआ? देखिए क्या शैतानी. What kind of mischief did Nilkanta do? This boy Nilkanta was really naughty and got into trouble a lot. He made friends who weren't good for him. अब नीलकांत जो है सोसाइटी मतलब कॉलोनी के ऐसे ऐसे लोकेलिटी के ऐसे ऐसे लड़कों से मिलने लगा, ऐसे दोस्तों से मिलने लगा जो अच्छे नहीं थे, जो बुरे फैमिली से थे. Alright, so Nilkanta started mixing with those kind of boys who were not at all good. Their families were not good. So he met all the street boys, all the bad street boys, and that got him into a lot of trouble. And then the house also became chaotic. House in the sense Kiran's house. Okay. This house became very chaotic. ये घर जो है ये एकदम हल्ला गुल्ला से बिल्कुल भर गया. इसीलिए क्योंकि because of his friendship with a stray dog from the village. तो ये एक रास्ते के कुत्ते को जो है विलेज के रास्ते के कुत्ते को उसने अपना पेट बना लिया. Nilkanta had made a stray dog as his pet and he brought that stray dog at home in the house of Nilkanta, in the house of Kiran. तो उस कुत्ते को वो किरण के घर पे लेके आता था जहाँ पे अब नीलकांता रहता था. और ये जो है शरत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था. दिस शरत एंड शरत मदर कुड नॉट टॉलरेट दैट वी हैव गिवन यू शेल्टर. कम ऑन मैन, वी हैव गिवन यू शेल्टर. वी फाउंड यू ऑलमोस्ट डेड. वी फाउंड यू ऑलमोस्ट डेड. कहाँ पे? नियर द रिवर साइड. एंड वी ब्रॉट यू इनसाइड, gave shelter in our house, and now you are taking advantage of our of our nobility. तुम हमारे अच्छे बिहेवियर का इस तरीके से एडवांटेज ले रहे हो. तो इससे बेहतर है, इट इज बेटर दैट यू लीव द हाउस. डायरेक्टली नहीं कहते थे, दे वुड नॉट से दिस डायरेक्टली, बट इनसाइड दे थॉट दैट शरत नीलकांता वुड लीव द हाउस. ओके, क्योंकि नीलकांता हद से ज्यादा शैतान बन चुका था. ही हैड बिकम the naughtiest boy actually, even more than their expectation. पहले शुरुआत में थोड़ा सा naughtiness था, लेकिन इतना ज्यादा हो गया कि he made friends, then he would make the whole house dirty. पूरा घर वो गंदा कर देता था. he would play in the clay, पूरे मिट्टी में जाके वो खेलता था, पूरा घर गंदा करता था. he made a stray dog as his pet and he brought that pet stray dog at home. Alright, so everybody was fed up. तो हर बात का एक बात है, एवरीबडी बिकेम फेड अप ऑफ नीलकांत. सब लोग जो है नीलकांत से बिल्कुल फेड अप हो चुके हैं. सब लोग इन द सेंस किरण ने, नॉट किरण. किरण ऑलवेज. एंड वन मोर थिंग, ओके, वन मोर थिंग लेट मी टेल यू. व्हेनेवर दिस हैपेंड, एक्चुअली शरत वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ कैरेक्टर. शरत जो है जब भी ये सब चीजें देखता था, शरत वुड एक्चुअली समटाइम्स स्कोल्ड Nilkanta. Sharat would even go to the extent of beating Nilkanta also many a times, and this Kiran did not like. Kiran को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि शरत नीलकांता को मारे या उसे गाली दे. And it was only Kiran who supported नीलकांता. वो किरण ही अकेली एक लौती थी घर पे जो नीलकांता को सपोर्ट किया करती थी. It was only Kiran who supported नीलकांता, and this made Sharat into more frustration. शरत और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था ये पर्टिकुलर चीज देख के. ठीक है, बट यू सी किरण फाउंड हैप्पीनेस. किरण जो है शी फाउंड हैप्पीनेस इन हेल्पिंग द बॉय डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स ही कॉज्ड. तो मैंने अभी वही कहा कि किरण जो है शी ऑलवेज सपोर्टेड Nilkanta, and she found happiness in helping the boy despite all the problems he caused. वो stray dog लेके आता था, he made all the wrong friends. It did not matter to Kiran at all. Kiran always supported Nilkanta, and she also tried to make her husband also understand this. Come on, leave the little boy. He is an orphan little boy. He does not have a mother or a father. He got stranded like that. We have given him shelter. It's okay. Come on. He did not get a good family also. Okay, Kiran used to tell her husband that this boy Nilkanta did not get the love of a mother or a father, so he does not know anything about discipline because nobody taught him discipline.
अगर किसी बच्चे को डिसिप्लिन सिखाया नहीं जाएगा, उसे कैसे पता होगा डिसिप्लिन, कैसे पता होगा कैसे किससे बात करना चाहिए, हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू बिहेव, हाउ टू वॉक, हाउ टू सिट. So Nilkanta did not get any of those education. So now it is our responsibility to teach Nilkanta, to educate Nilkanta. So Kiran tried to educate Nilkanta, reading, writing, manners and all these things, but she failed. It was in vain. It did not work out at all. But still Kiran went on trying and trying. Okay. Now one day what happened is that Kiran became really happy one day when her brother-in-law Satish, that is Satish and Sharat are two brothers. So indirectly Satish is the brother-in-law of Kiran. So once she was very happy when her brother-in-law Satish came to visit for the holidays. तो holidays में सतीश जो है वो घर वापस आया अपने भाई से मिलने, अपनी माँ से मिलने, to meet his brother Sharad, to meet his mother and his bhabhi, okay, sister-in-law. Now let me tell you another thing, that Satish and Kiran are almost of the same age, okay, but after Satish arrived, Kiran did not have much time to be with Nilkanta. Now the attention from Kiran's attention from Nilkanta shifted to Satish. Alright, try to understand this students. Okay, बच्चों ये समझने की कोशिश करो तुम लोग कि पहले किरण और नीलकांता दोनों एक साथ जो है अपना टाइम बहुत अच्छे से बिता रहे थे. Nilkanta used to entertain Kiran by doing all the actings that he had learned in the theatrical group. But now when Satish came, Kiran gave all the time only to Satish, not to Nilkanta, and this made Nilkanta very jealous. Okay, so during this time Nilkanta began acting really very mean. So now that jealousy factor got inside Nilkanta. You understand that Nilkanta is a teenage boy, adolescent stage. Alright, he had a certain infatuation or attractiveness towards Kiran while playing, and this is a very normal thing. There's nothing wrong in that, okay, but if it takes a very wrong turn, then things may turn very dangerous, which will turn a little later. So during this time Nilkanta started acting really in a very bad manner because he was dying of jealousy, he was dying of envy, and he wanted to take revenge on Satish. Alright, now he started doing what? He started hiding things of Satish. तो इस जेलसी के चक्कर में नीलकांता जो है वो सतीश की चीजें जो है वो छुपाने लगा ताकि सतीश को वो चीजें ना मिले और सतीश जो है वो डिफिकल्टी में आ जाए. So that Satish does not get his important things, because those will be hidden by Nilkanta and ultimately Satish will fall in difficulty. Alright, so let's see what is going to happen next. Everyone got busy preparing to go back home. अब सब लोग जो है बैग पैक करने लगे. Everyone was going to pack their bags because now from Chandarnagar they are going back to their house, and Satish was also going back with them. Satish भी जो है घर लौटेगा. ठीक है. Students, let me tell you, they are still in Chandarnagar only, and Satish had gone to Chandarnagar. Now they were going back home. Okay, and up Satish. Now let me tell you, Satish. Okay, Kiran, Sharat, his brother Satish, and their mother. All four would be returning home. All four would be returning back home. So they told Nilkanta that Nilkanta, now that you are okay, we have given you food and everything, we have taken care of you, you are also now well, you go back to your own house, or you go back to your own group now. So Nilkanta was told to go back to his own house. Nilkanta was highly hurt with this statement. He wanted to stay. This made Nilkanta very, very upset. देखिए वो लोग घर लौट रहे हैं. They are returning back to their own house. They cannot take Nilkanta along with them. नीलकांता को उनके साथ नहीं लेके जा सकते. नीलकांता का घर कहीं और है. नीलकांता is a grown-up boy. He is not a baby. That they are going to take care of him, months after months, years after years. They cannot do that. Okay, so they told a very straight thing to Nilkanta. Nilkanta, we are going back to your own house. You go to your own house. We are not going to take you to our own house. Okay.
Now this made Neelkanta very upset and he was thinking of taking revenge from Satish. तो नीलकांता को बहुत ही upsetting feel हुआ और इस upsetting thing में वो सतीश से बदला लेना चाहता था because it was Satish who told नीलकांता कि अपने घर चले जाओ. अब उसको इतना बुरा लगा नीलकांता को. नीलकांता felt so bad that he wanted to take revenge on Satish. I will take revenge from you. अब revenge उसने क्या लिया? Satish had brought a very special ink pot. एक बहुत सुंदर सा इंक पॉट वो लाया था. ओके, इंक पॉट कुछ इस तरीके के होते हैं. एक बहुत सुंदर से इंक पॉट लाया था खरीद के. ओके, एंड इट वाज हिज फेवरेट इंक पॉट एंड दैट ही हैड ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम कैलकाटा. वो पूरे कैलकाटा से ऑल द वे फ्रॉम कैलकाटा ही हैड ब्रॉट दैट. एंड यहाँ पे दूसरा टाइटल जो आता है वो है नीलकांता द थीफ. सो फ्रॉम द टाइटल इटसेल्फ यू कैन गेस व्हाट नीलकांता हैड डन. इट वाज नाउ दिस, ये जो इंक का बॉटल था, ओके, दिस इंक पॉट, ये जो इंक पॉट था, ये इट वाज ऑन अ ब्यूटीफुल स्टैंड. एक बहुत ही सुंदर स्टैंड के ऊपर ये बॉटल रखा हुआ था. एंड दिस स्टैंड वाज शेप्ड लाइक अ बोट. ये स्टैंड जो था ये एक बोट जैसा था. And this boat had pearls, silver, and one silver with pearls, and one silver goose was holding this pen. एक पेन था जिसे एक सिल्वर गूज जो है वो पकड़ा हुआ था एंड यहाँ पे जो है वो बॉटल था. So it was a very beautiful ink pot. Okay, and what happened is that the day before they were leaving, the special ink pot went missing. अब एक दिन पहले, ओके, एक दिन पहले मतलब वो कल निकलने वाले हैं और आज वो इंक पॉट गायब हो गया. टुमारो दे आर गोइंग टू लीव एंड टुडे द इंक पॉट वेंट मिसिंग. सतीश को इमीडिएटली पता लग गया. सतीश इमीडिएटली न्यू दैट इट वाज नीलकांता एंड ही गॉट रियली एंग्री, रियली मैड एट हिम. सतीश को बहुत गुस्सा आया क्योंकि सतीश वाज 100% श्योर दैट नीलकांता हैड स्टोलन द इंक पॉट एंड ही वाज डैम एंग्री ऑन नीलकांता. ऑलराइट, नाउ किरण वाज फीलिंग वेरी अपसेट. किरण को यह बहुत बुरा लगा when Satish started scolding Neelkanta like that. Okay, she felt really very upset about this, and she even went to Neelkanta and very quietly, very silently asked Neelkanta to return it without anyone knowing. But Neelkanta started crying. Alright, तो किरण जो है एक दिन वो, उस दिन किरण जो है वो चुपचाप नीलकांता के पास गई और नीलकांता को कहा, चुपके से कहा कि नीलकांता, अगर तुमने वो इंक पॉट लिया है, वो पेन स्टैंड, इफ यू हैव टेकन, प्लीज रिटर्न इट टू सतीश विदाउट एनीवन नोइंग. जस्ट कीप दैट इंक पॉट ऑन इट्स एक्चुअल प्लेस विदाउट एनीबॉडी नोइंग. चुपके से वो इंक पॉट रख देना उसी जगह जहां से तुमने चोरी किया था, किसी को बिना बताए. मैं भी किसी को नहीं बताऊं क्योंकि इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. बट नीलकांता started crying like anything, that even you suspect me like that, कि तुम भी मुझ पे ऐसे सस्पेक्ट कर रहे हो. Alright, now whether Neelkanta had really stolen or not, that is a different thing. Otherwise, why would Neelkanta cry? तो नीलकांता इस बात को लेकर बहुत दुखी था कि किरण ने मुझ पे भी सस्पेक्ट किया. एवरीबडी, सब लोग मुझ पे सस्पेक्ट करे, ठीक है, लेकिन किरण ने मुझ पे सस्पेक्ट किया. ये उसको बहुत बुरा लगा. Kiran felt really very sorry for Neelkanta. So when Kiran saw Neelkanta crying like that, she felt really very, very sorry for Neelkanta. And she decided to do something nice for him. तो किरण ने सोचा कि as a reward, उसको हंसाने के लिए, उसको उसकी खुशी उसको वापस लौटाने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए. I should do something. Kiran felt. So what did she do? She bought 2 new sets of clothes, a pair of shoes, some money as a surprise gift, and wanted to put them in his box. तो किरण ने सोचा कि एक सरप्राइज मैं दे दूं नीलकांता को. Let me give a small surprise to Neelkanta. So she bought all these things from the market. 2 नए कपड़ों के सेट, एक जोड़ा जूता, a pair of shoes, कुछ पैसे as a surprise gift. And she wanted to put them quietly in Neelkanta's box. नीलकांता का एक बॉक्स था, लगेज बॉक्स, ट्रंक टाइप का. ओके, ये आयरन का, लोहे का बना हुआ या स्टील का बना हुआ. ओके, तो she wanted to put them in that box very quietly as a surprise, so that when Neelkanta opens the box, suddenly all these things will pop out. And
this boy Nilkanta will be very much surprised. लेकिन अब क्या होता है, थोड़ा कहानी में ट्विस्ट हो जाता है. Now, as she opened the box, जब चुपके से, see, Nilkanta is not there inside the house. Okay, it was only Kiran. She had quietly entered Nilkanta's room and she had opened the box. She was going to put all the surprise gifts inside the box. And she opened the box. Everything inside got mixed up. अब जब उसने वो बक्सा खोला, when she opened the box, everything inside got mixed up. Okay, because he was a small boy, you see, 14 to 17 years of age group, a teenage boy. बहुत मेसी तरीके से हो सारी चीजें जो है बॉक्स के अंदर रखा था. What happened is that when she was arranging all these things, तो किरण जब उस बॉक्स के अंदर जब किरण सब ठीक ठाक कर रही थी, when she was arranging all these things, what happened? The lid popped out. और वो lid pop out जब हुआ, she started taking things out to organize them. तो चीजों को जो है ट्रंक के अंदर से, that box के अंदर से, from inside the box, किरण was taking everything and putting out, because after that she would arrange everything and keep it in a very arranged manner inside the box, including her own gifts. तो उसके जो जितने कपड़े थे, नीलकांता के जितने कपड़े थे, वो सारे जो है बहुत scattered position में थे. तो किरण ने ये सोचा. Now what happened is that ये जब सामान निकाल रही थी, when Kiran was putting out all the items from the box outside, what happened at the bottom? She found the lost ink pot. Kiran had thought that Nilkanta did not steal, but now the ink pot was inside the box and it was lying at the bottom of the box. Box के बिल्कुल bottom में वो रखा हुआ था. अब केस क्या हुआ? What is the scene? Nilkanta was right at that time. Nilkanta had entered the room and he was standing behind her, watching her find it. And Nilkanta did this very very quietly. नीलकांता जो है वो सडनली रूम के अंदर घुसा है और उसने देखा, क्योंकि किरण was sitting like that, right? And she was arranging all the things, and suddenly the ink pot comes out, and Nilkanta was standing behind and looking over the shoulder of Kiran, and Nilkanta discovers that Kiran को सब पता लग गया, because Nilkanta was behind her, watching her find it, and he was doing it quietly. Kiran did not know that Nilkanta was standing behind. Actually, Nilkanta had made a mistake. He had planned to throw it into the river to get back at them. उसने प्लान किया था कि वो इस इंक पॉट को नदी में फेंक दे. उसको उसने बैग में रखा था. He had kept the ink pot in that box, but actually he wanted to throw it out, but वो भूल गया शायद. Maybe he had forgotten. When Kiran was busy, he quietly left the room without her noticing. तो Kiran busy था. Kiran had noticed. Kiran had seen the ink pot. Nilkanta felt immediately that now I have fallen in the eyes of Kiran. एक किरण ही थी जो मुझे सपोर्ट करती थी. अब मैं किरण के आंखों में भी गिर गया. I have fallen in the eyes of Kiran also. He quietly left the room without her noticing him. वो चुपके से कमरे से निकल गया. Very silently he left the room. Kiran did not see anything. Now Kiran quickly put everything back into the box. तो किरण जो है उसने देखा वो इंक पॉट, and she was still supporting. She did not wanted Satish or Sharat to find out that it was actually this boy Nilkanta who had stolen. So she very quickly put all these things inside the box and closed the lid. By that time this boy had gone out. Nilkanta lost. The next day the boy was gone. वो जो उस दिन निकला Nilkanta, that day the Nilkanta had gone out. He had gone out forever, and nobody could find him ever, not even the police. Even Sharat, on the request of Kiran, maybe Sharat had even informed the police to search Nilkanta, but Nilkanta was nowhere to be seen. Sharat wanted to check the boy's box to understand him better, but Kiran did not want to do so, and Sharat left. तो शरत ये चाहता था कि नीलकांता का बॉक्स में थोड़ा चेक करो, but Kiran
told Sharad that no, you cannot check the box. Kiran told her husband Sharad that you cannot check the box. So Sharad left. Sharad did not check the box. You see, Kiran was still supporting. She knew that Neelkanta had stolen the ink pot, but she did not wanted anyone to know about that. All right, and so that no one suspects. See, now Neelkanta is gone. So that no one suspects Neelkanta, Kiran did what? She threw all the things that were missing into the river. तो जो सारी चीजें जो घर से मिसिंग हो रहा था, because you remember, I'll just go back a little bit for all of you to understand one thing. Here, this one, that Neelkanta, when Satish arrived, Kiran gave all her time to Satish. Now Neelkanta started acting, he was very jealous, envious of Satish, and he started hiding things of Satish. All those things that Neelkanta had hidden, all those things of Satish that Neelkanta had hidden, actually he put it inside his box. His box में जाके वो रखता था, including the ink pot also. And Neelkanta had thought that I will throw all these things in the river one day, but he forgot somehow. Okay, वो भूल गया. तो अब किरण ने क्या किया, ताकि नीलकांता जो है उसका कैरेक्टर जो है सबके सामने बिल्कुल क्लीन रहे. नीलकांता's कैरेक्टर इज क्लीन इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी. किरण थ्रू ऑल द थिंग्स इन द रिवर. जो भी चीजें जो है चुराया था नीलकांता ने, वो सारी चीजें उसने नदी में फेंक दिया किरण ने. द फैमिली वेंट बैक टू देयर हाउस. तो फैमिली जो है, पूरा फैमिली घर चला गया. अब नीलकांता का वो स्ट्रे डॉग जो है, दैट नीलकांता's hungry dog wandered near the river crying sadly. अब नीलकांता का जो कुत्ता था वो नदी के सामने जो है वो बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहा था. ओके, obviously this dog was missing Neelkanta. This dog was missing Neelkanta. Now what is the understanding of the story? अब कहानी तो आप सब लोगों ने सुन लिया. अब अगर आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया तो this story is revolved around one particular theme that you have learned in the additional English book in class 10 also, the postmaster. थोड़ा सा philosophy उसके साथ मिलता जुलता है. हालांकि that story is a different story, but little bit of themes are almost same here. What are the themes now we are going to discuss? Okay, and one more thing, I have uploaded some answers including the character of Neelkanta, including the character of Kiran, and some questions and answers on my website, omnigyan.net. The link of the website is given in the description box. Please go and check the website. And the character of Neelkanta, the character of Kiran is there on my website. Two very important character studies. Full answer I have given, and 2-3 questions and answers I have given. Like what is the central theme? I am going to show you the central theme, but I have given a very organized note. So please check the notes from there. ओके, नोट्स आप वहां से चेक कर लीजिएगा. आप यहाँ पे देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी, कि कहानी का सेंट्रल थीम क्या है, व्हाट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी. तो स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड मल्टीपल थीम्स. यहाँ पे बहुत सारे थीम्स है कहानी में, जैसे अबंडनमेंट. अबंडनमेंट इन द सेंस द कास्टअवे. कास्टअवे मतलब कास्टअवे. व्हाई इज द स्टोरी कास्टअवे? व्हाई इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी कास्टअवे? कास्टअवे मतलब जैसे कि बह के कहीं पे दूर चला जाना, अपने एरिया से कहीं पे दूर चला जाना, वो होता है कास्टअवे. तो पहला कास्टअवे क्या है कि नीलकांता हैड बीन stranded on a particular shore because he was left out from his own group, so he was a castaway from his group. Another castaway is that the family of Kiran could not accept Neelkanta as their own family member, so he was cast away from that family also. All right, so that is why it is castaway. So abandonment means living alone, okay, or leaving something alone. किसी चीज को जो है आप जो है फेंक देते हैं ना, without attention, that is abandonment. When you don't pay attention to something, you just throw it out. Jealousy is one thing. We have jealousy. Whose jealousy? It is Neelkanta's jealousy. Shame, yes, we have shame. Neelkanta's shame when he discovered that, when he found that Kiran had already seen the ink pot in my box. Mercy, from Kiran's side only, mercy is only there. Compassion is also only from Kiran's side. Forgiveness is also only from Kiran's side. Another theme, understanding, kindness, these are all from the side of Kiran only in the entire
out of the entire characters that we see, all the characters that we see, it is only Kiran. Neelkanta's character shows that even though he got so much love from Kiran, he had been very naughty and had taken undue advantage. अब नीलकांता का कैरेक्टर देख के कभी कभी गुस्सा भी आता है कि नीलकांता को इतना प्यार मिल रहा था, खाना मिल रहा था, he was getting very good treatment in the house of Kiran. Sharat was also not bad, but then Neelkanta had taken undue advantage of their nobility. उनका जो ये जो बिहेवियर था, पोलाइट बिहेवियर था, उसका अनड्यू एडवांटेज ले लिए. ही स्टार्टेड बिकमिंग वेरी नॉटी. ही हैड मेड ऑल द रॉन्ग फ्रेंड्स. ही हैड मेड अ पेट डॉग. एक रास्ते के कुत्ते को उसने एक पेट डॉग, अपना पेट डॉग बना लिया. उसको लेके वो घर पे भी आता था. अब वो उसका घर तो रहे ना, आप किसी के घर में घूमने गए, यू वेंट टू विजिट योर फ्रेंड इन हिज हाउस. You cannot do anything and everything that you want. You have to sleep, eat according to their timing, according to their wish. You cannot tell that because I eat my dinner at 7 p.m. you have to give me at 7 p.m. only. No, it can be 8 also, 8:30 also, 9 also. ठीक है ना? तो Neelkanta had taken undue advantage. But you must also understand that it was not entirely Neelkanta's fault because he had never received love from anyone else. उसका ना तो माता जी का, मम्मी का कोई ठिकाना है, ना पिताजी का कोई ठिकाना है, ना उसका कोई फैमिली हमको पता है. वो कहाँ पे पला, कहाँ पे बड़ा, ये सब एक फैक्टर है. वो एक थियोरेटिकल ग्रुप में है. he belonged to a theoretical group where we can easily say that because he did not learn discipline, that means what? क्योंकि उसको डिसिप्लिन मिला ही नहीं. इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है क्योंकि उसको किसी ने कभी डिसिप्लिन सिखाया नहीं. Nobody had ever taught him how to behave. And that is why he was behaving in this manner. He did not know manners at all. उसको manners ही नहीं पता. इसलिए क्योंकि he never received love from anyone else and had never learned how to behave properly. Kiran wanted to educate him, but it would have needed a little more time. It is not that one day suddenly Kiran, or 2 days suddenly Kiran will give education to a boy of 14 or 14, 15, 16, 17 years of age. It is not going to happen. You need more time, patience. That Kiran did not have. Kiran did not have, it is wrong. Actually, this boy Neelkanta was also not giving time due to his mischievous attitude. Neelkanta's jealousy towards Satish compels him to steal the pen stand. ये हमें पता है कि it is, he did not wanted to do anything bad, but actually it was his jealousy only that he started stealing all the things that belonged to Satish. Even he goes to the extent of stealing his favorite pen stand. There was no other major harm that he had done. इससे ज्यादा harm क्या कभी आपने देखा है नीलकांता ने किया है? नहीं. नीलकांता had done no major harm. उसने एक पेन स्टैंड ही चुराया है. और क्या किया उसने? मर्डर थोड़े ना कर दिया किसी का, या हाथ काट दिया किसी का, है ना? तो मेजर हार्म उसने कभी नहीं किया. इट इज आउट ऑफ जेलसी. एंड what was needed at that time is to understand this boy. It was only Kiran who did this. But Kiran also had certain limitations. She cannot go beyond the wish of her family. Kiran अपने family के wish के beyond नहीं जा सकती. She also has got some limitation. Sharat punished Neelkanta unnecessarily many times. If you see the story, you will see that Sharat ने नीलकांता को बहुत पनिशमेंट दिया, समटाइम्स अननेसेसरीली आल्सो विदाउट अंडरस्टैंडिंग. देखिए, पनिशमेंट से कोई बच्चा सुधरता नहीं. पनिशमेंट से कोई बच्चा सुधरता नहीं. नो चाइल्ड गेट्स बेटर विथ पनिशमेंट. हाँ, कभी कभी डराना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अननेसेसरी पनिशमेंट सब दे या कोई किसी को दे. और सबसे दुनिया में जो प्रॉब्लम है वो है कंपैशन का. वी हैव एवरीथिंग बट नो कंपैशन. यू नो, वन डे आई वाज टेलिंग my wife that suddenly it occurred to me one day. I was telling my wife that human beings can do everything. They can send satellite to Mars. They can send satellite to Sun. They can send satellite to the to the moon. They can do anything they want. They can walk on water also. We have seen television shows where magicians who walk on the water, whatever the tricks are, but human beings can do everything. But two things human beings cannot do. दो चीजें इंसान नहीं कर सकते. एक है माफ करना और एक है माफी मांगना. गेटिंग द पॉइंट? एक है माफ करना, दूसरा है माफी मांगना. टू टेल सॉरी एंड टू फॉरगिव. दीज आर द टू थिंग्स. सॉरी, apology, okay,
and forgiveness. These two things human beings cannot do. We cannot do, because that hurts our ego. If I tell you to tell sorry to somebody, it will hurt your ego. If somebody tells me to forgive somebody, कि किसी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन फिर मुझे किसी ने कहा कि चलो उसको माफ कर दो, कोई बात नहीं, forgive, no, that will hurt my ego. नहीं, मुझे बदला लेना है, I have to take revenge. So for every action there has to be an opposite and equal reaction. Science. Okay, बस जिंदगी जो है उसमें फिलोसॉफी लिटरेचर की ज्यादा जरूरत है. क्यों? क्योंकि apart from scientific advancements, we are slowly, we are scientifically becoming advanced, but slowly, somewhere we are losing the human values. कहीं ना कहीं पे हम लोग human values जो है उसको lose कर रहे हैं, and this is very alarming actually. नीलकांता got affection only from Kiran. ये भी हमको पता है कि नीलकांता got affection, support only from Kiran and nobody else, and that is why the entry of Satish makes him angry. क्योंकि there was only Kiran in the family with whom नीलकांता spent time. अब सतीश जो है, हम लोग सीधे लैंग्वेज में अगर कहें तो सतीश was the कबाब में हड्डी between नीलकांता and किरण. और नीलकांता को ये बहुत बुरा लगा कि किरण पहले मेरे साथ बहुत अच्छे से टाइम बिता रही थी, अब सतीश आ गया. अब किरण का अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो गया टूवर्ड्स सतीश. किरण's attention diverted towards Satish now. Kiran was not giving 1 minute also to Nilkanta. That made this boy very jealous. And that is why out of anger, out of jealousy, anger in the sense jealousy, out of anger, out of jealousy, this boy goes to the extent of stealing things of Satish, even the inkstand also. Now the boy Nilkanta had never got love or affection from anyone in his life. ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि ये जो नीलकांता जो है, this Nilkanta, this boy, he never got affection or love from anyone in his life. That is why it is a problem. Had the family of Satish, Sharat understood more, they could have supported Nilkanta, I think. They could have tried to rectify the behavior of Nilkanta, but that never happened. No one has patience. Alright, so here the story ends with a lot of things, and please don't forget to check the notes that I've just said, okay? The notes on Nilkanta's character, Kiran's character, two basic things, and the central idea of the story. And one more question is there, okay? You can check from, because you will find it from the name of the chapter only. The name of this chapter is given along with the title. So please go and check my website for the notes. Alright, so that's all from me for today. Thank you so much for watching the video, and please subscribe to the channel, like and share my videos with all your friends. Plenty of good things are going to come ahead, and don't forget to follow me on Instagram, okay, because a lot of notifications I give there also. With love from Omni Gyan, and all the best to all of you. Thank you so much.